अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ अस्मा। आज हम जो पढ़ेंगे शर्तिया जुमलों के बारे में, जिनमें शर्तिया वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं, कंडीशनल वर्ड्स इस्तेमाल होती हैं इन द सेंटेंसेस इन एडवांस्ड इंग्लिश ग्रामर। सो लेट्स बिगिन। Today's rule is about the use of providing that or provided that. Providing that और प्रोवाइडिंग दैट और प्रोवाइडेड दोनों आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं सेम मीनिंग के साथ। फॉर एग्जांपल, ट्रैवलिंग बाय कार इज़ कन्वीनियंट प्रोवाइडिंग दैट आर प्रोवाइडेड दैट यू हैव समवेयर टू पार्क। व्हाट डज इट मीन दैट सफ़र करना आसान है, बशर्ते ये कि गाड़ी को पार्क करने के लिए जगह मौजूद हो। तो इसका मीनिंग ये बन रहा है, प्रोवाइडिंग दैट और प्रोवाइडेड दैट मीन बशर्ते ये कि इट्स कन्वीनियंट बट ओनली इफ़ यू हैव समवेयर टू पार्क। नेक्स्ट एग्जांपल इज़ दैट प्रोवाइडिंग दैट और प्रोवाइडेड दैट द रूम इज़ क्लीन आई डोंट माइंड विच होटल वी स्टे एट। बशर्ते ये कि कमरा साफ़ सुथरा हो, मुझे कोई एतराज़ नहीं कि हम किस होटल में ठहरते हैं। That's the meaning of this sentence. The room must be clean but otherwise I don't mind. That is the meaning. और इससे पहले हमने यूज़ ऑफ अनलेस, यूज़ ऑफ as long as or so long as, and now the last part of the conditional words, conditional rules in advanced English grammar is the providing that or provided that. सो लेट्स द प्रैक्टिस ऑफ दिस रूल। आपको ये कंप्लीट करना होगा सेंटेंस। एट द बॉटम आई हैव प्रोवाइडिंग जो it takes 20 minutes to drive to the airport provided. Now complete this sentence in the comment box. Thank you.